me. How do I know if I'm doing it right? How do I know if I'm doing this correctly? बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम करेक्ट कर रहे हैं या नहीं, जो भी हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं. There's only two things. Two only. No matter what anybody else says, trust me, only two. Number one, was it easy? Did anybody have any trouble? You know, there's a lot of noise, but we let it go and we come back. A thought comes in, we let it go and come back. Oh, we have an itch? Scratch it. Then let it go and come back. Was it easy? Anybody have a problem? Was it easy? Easy था या नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम था मेडिटेशन करने को? You see, many people think incorrectly that meditation means no thoughts. बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है कि कुछ भी नहीं सोचना. No thoughts. No. No. The mind is going to bring thoughts up. It's just going to happen. That's what it does. The mind thinks thoughts, feels sensations. But we can control, or we can make the decision not to pay attention to the thought, not to pay attention to the outside. In other words, we can make the decision to let go of these other thoughts, sensations, and feelings. जो ये लोग सोचते हैं वो गलत सोचते हैं. मेडिटेशन मतलब कुछ नहीं सोचना, ऐसा नहीं है. हमारा माइंड है, उसका काम ही है सोचना. वो अलग अलग थॉट्स बिल्ड करता रहेगा आपका माइंड जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हो. लेकिन ये हमारे हाथों में है कि हमें कौन से थॉट सोचना है और कौन सा छोड़ देना है. वी हैव टू लेट द थिंग्स गो. हमारा डिसीजन है. समझा? The key, the most important thing about meditating correctly is to let go of the thoughts. No matter if they're happy, sad, school, friends, parents, it doesn't matter. A thought is a thought. That's all. It's just energy inside the mind. Right now, when you're meditating, you can't do anything with those thoughts. You're just there. So we don't want to hold on to them. We want to let them go and come back to attention gently on the breathing. जो भी थॉट्स आपके माइंड में आते हैं, अभी आप मेडिटेशन कर रहे थे, आपके माइंड में हज़ारों थॉट्स आए होंगे, ये वो कुछ भी. तो आपका डिसीजन था कि आपको अटेंशन किसको देना था, आपके मेडिटेशन को या थॉट्स को. थॉट्स आप कुछ कर सकते हो अभी यहाँ पे मेडिटेशन करते वक्त, उसके बाद में सोच के कुछ होने वाला है? नो. सो लेट देम गो. अभी जो करने आए हो वो करो. So, number two, the only other thing you could ask if you're doing it correctly, meditating correctly, do I feel more relaxed? Do I feel more peace, more at ease? Do I feel more rested? जैसा सर ने बोला, सिर्फ दो चीज़ें हैं जो हमें मेडिटेशन करने के लिए ये करते हैं. पहला कि हमने वो इजी था या नहीं, जो मैंने पूछा क्वेश्चन. सेकेंडली कि हमें रिलैक्स फील हुआ या नहीं हुआ. थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ. So those are the only two things. How simple. Is it easy? Do I feel more restful, more peaceful? That's it. If you're not, if it's difficult, or if you feel some tenseness, you're holding on to something. You're holding on. When you let go, the mind settles. It begins to calm down. The body begins to calm down. Automatically. Without you doing anything else. अगर आप लोगों को मतलब रेस्ट फील नहीं हुआ मेडिटेशन करके, इसका मतलब कि आपके माइंड में कुछ तो थॉट था और आप वही सोच रहे थे. यू आर नॉट योर अटेंशन इज नॉट ऑन मेडिटेशन. चीज़ें छोड़ दो. यू आर तो इससे क्या होगा, आपका फोकस भी करता है. I didn't make this up. This little technique
maybe 8 or 10,000 years old. It came from the rishis of India. And the rishis, the gurus, passed it to their students. Their students became teachers. They passed it to their students. How to do this? Down through thousands and thousands of years. The same simple little practice has been done. And my guru taught it to me. And I am passing it along to you. That's our job. Why? When you do this, maybe 5-10 minutes twice a day, in the morning before breakfast, after you clean up and wash your face, brush your teeth, then sit for 5 minutes. Just be with yourself, letting go of all other things, and just putting your attention back on your breathing. Little by little, your mind will change. It will begin to automatically let go of things you don't need. You can't do anything with right now. You let it go. If you're not doing something with a thought, why keep going over and over? Waste of life. जिस थॉट का अभी आप सोच के कुछ कर नहीं सकते हो, उसको सोच का कोई फायदा है तो छोड़ दो उसको, ठीक है? जैसे सर ने बोला कि ये उनका स्ट्रैटेजी नहीं है जो बता रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी हमारे ही ऋषि मुनियों ने दी थी मेडिटेशन की, और उन्होंने उनके स्टूडेंट्स को दी, फिर वो स्टूडेंट्स टीचर बने, उन टीचर ने उनके स्टूडेंट्स को दी, फिर उन्होंने इनके गुरु जी को दी, उनके गुरु जी ने इनको दी, और उन्होंने आपको पास आउट किया। तो वैसे ही हम ये जो स्ट्रैटेजी है मेडिटेशन वगैरह, थॉट्स को ना सोचने की, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये पास ऑन करते हैं। अंडरस्टूड? So little by little, each day, the mind changes. So when you are studying, when you're with your friends, effortlessly and automatically your mind will stay focused, because you've been practicing letting go of things that are not useful to you right now. You're practicing this in your meditation. So if you're studying, your mind automatically focuses. Other thoughts may come in, but let them go. You see? It not only helps to relax your meditation, but it trains your mind to pay attention without effort. जब भी आप पढ़ते हो, आपके माइंड में बहुत ख्याल आते होंगे ना, कि इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, उधर भैया क्या कर रहे हैं, किचन में क्या खाना बना रही है, लेकिन नहीं। तो जब आप पढ़ते हो, ये आपके हाथ में है कि आपका थॉट आपको इधर चाहिए या उधर आप कुछ कर पाओगे। मम्मी क्या खाना बना रही जान के आप क्या करोगे? आपको तुरंत मिलने वाला है क्या? जब आपको मिलेगा तब आप खाने ही वाले हो, राइट? यस और नो? सो थॉट्स जो नहीं आपके हाथ में है वो छोड़ दो, ओके? एंड इससे क्या होगा, आप आपकी माइंड को ट्रेन करोगे कि आपका ध्यान, आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, एक टाइम पे एक चीज़ पे, तो वो चीज़ आपकी परफेक्ट होगी। गॉट इट? So, I've been doing this same practice for over 55 years. Every day, and little by little, it completely changed my life. People ask me, how did you learn to be an engineer? Or how did you learn to play music? How did you learn to do swimming? How did you learn to do diving? How did you learn all these things? Simple. When I was learning it, my mind was focused. The knowledge came and stayed. I didn't have to work hard at it. And it happened by itself because I changed the way I thought. I changed where my attention was. If you can do this, I guarantee you, it will completely change your life. And I do it to this day.
every single day of my life. I do it. And I tell you, the little bit of time that you take, this will benefit you so much. I can't begin to explain all the wonderful things that you can do when you are steady, when your mind is focused, when your body's relaxed. It totally will change your life. जैसे आप सबको पता है, आपके फाइल्स में सर के फोटोज हैं, उन्होंने क्या क्या अचीव किया है, क्या नहीं किया है, स्विमिंग, डाइविंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दैट स्टफ इज देयर. ओके, तो वो कैसे किया उन्होंने हासिल? वो सब मेडिटेशन से किया, क्योंकि वो फोकस थे, उनको क्या करना है क्या नहीं, एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस थे, और ये उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब अपने आप होते गए. I didn't say open your books. It's scattered. When it's not in your control, it'll flitter like a bird. Here, 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 here. All your energy will be wasted going here, going there, without doing anything. This helps you learn to train your mind effortlessly, so you won't be distracted, opening your books when you shouldn't, bothering with your friends when you shouldn't. It's called focusing of attention, gently. It doesn't take a lot of work, but it does take a little self-discipline, self-control. You must have this in life. हमारे पास हमारे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए. खुद को क्या करना है और क्या नहीं, ये हमारे हाथ में होता है, राइट? अगर आप आपके हाथ को बोलोगे नहीं यहाँ पे खिंचाओ, तो वो खिंचाएगा क्या? नो, इट इज़ इन योर हैंड, राइट? आपको कंट्रोल आना चाहिए, आपके लाइफ का, आपके बॉडी का, सबका. Okay, so when you meditate in the morning and afternoon, best time is before you eat breakfast, after you have gotten dressed for school, whatever, in your room, door closed, tell family, I'm going to meditate for 10 minutes or 5 minutes, whatever, don't bother me. In other words, give yourself some time to yourself, for yourself. Your mommy and daddy, school, everything will still be there. Take a little time for yourself. सबसे बेस्ट टाइम आपको मेडिटेट करने के लिए सुबह नहाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने से पहले, आपको खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के एक जगह पे पेरेंट्स को बोलना है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे थोड़ा टाइम खुद के लिए चाहिए. स्कूल, पेरेंट्स, टीचर्स सब वहीं पे रहने वाले हैं, ठीक है, लेकिन आपको खुद के लिए थोड़ा सा टाइम देके अपने आप को शांति से मेडिटेट करना है. स्टैंड अप. यस, इन द मॉर्निंग आफ्टर आपका नहाने का वगैरह हो गया, खाना आपके ब्रेकफास्ट खाने से पहले, बिफोर यू हैव समथिंग, you have to. There's a reason for this. So in the morning before breakfast, when you get home after school, change clothes, maybe relax a few minutes, then say, I'm going to meditate a few minutes before dinner, 5 or 10 minutes, that's all. Take these few minutes for yourself. Get into the habit. Establish a habit of sitting down and being quiet in the morning for a little while. The habit of sitting down in the afternoon before supper by yourself in your room, no radios, no nothing, just quiet. Just be silent for a few minutes. Okay? रोज की आपकी एक हैबिट बना लो, सुबह स्कूल में आने से पहले, ब्रेकफास्ट करने से पहले थोड़ा टाइम खुद के लिए, जहाँ पे कुछ भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, ना पेरेंट्स, ना म्यूजिक, ना टीवी, ना कुछ, शांति से बैठो. ओके, एंड शाम को स्कूल से वापस जाने के बाद जब आप फ्रेश होते हो, डिनर से पहले थोड़ा टाइम 5 मिनट शांत बैठो, कुछ मत बोलो, कुछ मत सुनो, शांत, जैसे अभी आपने किया सेम, ठीक है? खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो. Exactly, I'm going to have to come over here a little bit in between because these folks can't hear. Okay, so are you able to hear what I am saying?
Yes. Okay. Now, why do we meditate before eating? Well, when we eat food, your body knows to start the digestive process, doesn't it? Blood comes to the stomach, different chemicals go into the stomach, your whole digestive process kicks into gear. When you're meditating, your body calms down, and it will actually shut down the digestive process automatically because it says, oh, it's quiet time. So the food will just sit in our stomach, not doing much, okay? Because the whole body is relaxed. There's a time for it to digest and there's a time for it to rest. In the resting, all of the organs of the body relax. All of the organs and tissues of the body conserve their energy. This helps heal anything that's wrong in the body when we give it this little amount of time for silence, to be silent, to be quiet. सर ने क्यों बोला कुछ भी खाने से पहले आपको करना है, क्योंकि अगर आप जब भी मेडिटेट करते हो आप शांत बैठते हो, आपके बॉडी के ऑर्गन्स हो या टिश्यूज हो, कुछ भी आपके अंदर जितना भी कुछ है सब शांत हो जाता है, उनको लगता है अभी रेस्टिंग का टाइम है, ठीक है? तो तब अगर आप खा के बैठोगे तो फूड आप जब खाते हो तो उसको टाइम लगता है डाइजेशन के लिए, राइट? तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा कि शांति का टाइम है, शांत रुको, तो डाइजेशन नहीं होगा आपके फूड का, राइट? इसके लिए आपको खाने से पहले मेडिटेट करना है, जिससे कि शांत का टाइम हो जाएगा, वो भी रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद आप खाना खाओ, फिर वो अपना अपना खाना डाइजेस्ट करेगा, ठीक है? पहले ही अगर आप खा लोगे तो फिर वो डाइजेशन नहीं हो पाएगा फूड का प्रॉपर, ठीक है? Now, there's going to be times, if you start to try to do this each day, where you will miss a meditation. Don't feel bad about it. Just try to keep in the habit. Things happen, but just try to bring yourself, just like back in meditation, bring yourself back to doing it twice a day. But don't say, oh, this is terrible, I didn't meditate today. No. Life is easy. Just refocus your energy. That's all. Every day is new. The past is the past. It's gone. Only look forward. Pay attention to this moment. Pay attention to where I'm going to go, what I'm going to do. But never look back, except maybe what did I learn. But that's all. सर ने क्या बोला कि आप जब भी थॉट्स आते हैं आपके माइंड में, आपको वो एकत्रित करना है, अटेंशन, आपको फोकस क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको पीछे का नहीं सोचना है, एक्सेप्ट कि आपने सपोज कुछ चीज़ गलत कर दी, उससे आपको क्या एक्सपीरियंस मिला, क्या सीखने को मिला, वो छोड़ के बाकी कुछ भी पीछे का नहीं सोचना है, ठीक है? Got it? Now you notice that I've spent a fair amount of our class time on this. Why? Because no matter what else, other information I give you, there is nothing more important that I will ever say than what I've said about this, about meditation and its benefit to you. Nothing is more important. Because if you do it regularly, yeah, I absolutely guarantee your thinking will change, be more focused. You will have better positive thoughts. Your body will get more rest and you won't get sick as much because it's stronger. Your whole life will improve. And over time, and that amount of time is different for each one of us, your life will transform into something that is beautiful beyond your understanding. Is beautiful beyond your understanding. Just by doing this simple practice and just letting life flow gently.
अगर आप मेडिटेट करते मतलब आपने अगर हैबिट बना ली उसको, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि आपकी लाइफ इससे बहुत ही खूबसूरत बनेगी। ओके, क्योंकि वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाएगी, जिससे कि आप बीमार नहीं पड़ोगे ज़्यादा। ठीक है। एंड सेकेंडली, अगर आपने हैबिट बना ली, एक आध बार ऐसा आएगा जब आपके मेडिटेशन स्किप हो जाएंगे, बट डोंट फील बैड अबाउट इट। बुरा मत सोचो, बुरा मत फील करो उसके लिए। आप वापस से कंटिन्यूटी कर सकते हो। ठीक है। लेकिन जब आप इसको हैबिट में रखोगे, तो एंड में जाके आपकी आगे की लाइफ इतनी स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल होगी दैट यू वोंट इमेजिन। Very good. Thank you all for paying such good attention. I do appreciate it, and I hope that these help you. Now, we will take a look at some of the information in our class. If you are on the first page, we're going to talk about words to live by. What that means is, these may be words, Don't open your but they are files. only of value if you take these words and you put them into action. You live them. Just listening, not much good. Step one, living them in your daily life, letting your actions be guided by these words. Now that is useful. सर बोल रहे हैं कि सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, इसको आपके लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट करना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप वो करोगे नहीं, तब तक आपको उसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। यस। Action more important than words. यस, आपकी जो क्रिया है आप करने वाले हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट रादर देन सिर्फ आप बोलने से। ओके, करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। So, if you open your books now, first page,